स्पेशल एजुकेटर्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स की आईपी के बारे में सोचते रहते हैं। बच्चों के मेजर कंसर्न्स या चैलेंजेस एंड लर्निंग गैप्स को ध्यान में रखते हुए अक्सर मन में एनुअल गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, अकोमोडेशंस, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीएलएम, इंटरवेंशन के लिए एक्टिविटीज जैसे डाइवर्स पहलुओं का जवाब ढूंढते रहते हैं। तो क्यों ना हम साथ मिलकर आईपी बनाने के प्रोसेस को समझें और उसे डीमिस्टिफाई करने का प्रयास करें। ग्रीटिंग्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दिए गए बेसिक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान फॉर्मेट और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन गुरुज स्टूडेंट्स के साथ बिताए गए समय पर बेस्ड एक इमेजिनरी स्टूडेंट के लिए बनाई गई आईपी को समझने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है आपका इस वीडियो पर बिताया गया समय आपकी जर्नी में आपको काफी हेल्प करेगा। Let's begin with part A of the IEP. Name CC, date of birth 29 Feb 2021. G मान लेते हैं। Fathers and mother's name Mr. and Mrs. C. Gender फीमेल। इमेजिन करते हैं सीसी नॉलेज ट्री स्कूल में रिसेप्शन या किंडरगार्टन ग्रेड में पढ़ती है। सीसी अपने पेरेंट्स के साथ हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, एबीसी नगर, न्यू दिल्ली में रहती है। पेरेंट्स का ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर नोट करना भी जरूरी है। लेट्स से हमने आईपी को 30 अप्रैल 2025 को प्रिपेयर किया है। टाइप ऑफ स्पेशल नीड और एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। मेडिकल रिपोर्ट के एब्सेंस में सीसी के लिए हमारा फोकस एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट यानी इंटरवेंशन पर होगा। छोटे बच्चों के साथ वर्क करते समय हमें याद रखेंगे कि हर बच्चा अपनी स्पीड से पढ़ता और बढ़ता है। डिले इन माइलस्टोन्स और इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट मे और मे नॉट इंडिकेट अ चाइल्ड हैज अ स्पेशल नीड। सीरियस कंसर्न्स और साइंस एस्टैब्लिश होने पर ही हम सभी टीचर्स एंड पेरेंट्स से डिस्कस करके बच्चे को क्लिनिकल असेसमेंट के लिए रेफर करते हैं। एज फॉर्मल डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशंस सिर्फ क्लिनिकल एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं। एज स्पेशल एजुकेटर्स हमारा इंटरवेंशन का एम डेवलपमेंटल डिले और कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में है जिसमें इंटरवेंशन और सपोर्ट प्रोवाइड करने से बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए और पार्टिसिपेट करने में सक्षम बन पाए। यानी एक टारगेट ओरिएंटेड प्लान बनाना जो कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए कंसर्न्स, डिलेज, लर्निंग गैप्स को एड्रेस करें और उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट को अप्रोप्रिएटली एंड मीनिंगफुली सपोर्ट करेगा। सीसी के लिए 2 ब्रॉड डोमेन्स एंड एरियाज ऑफ कंसर्न है। फर्स्ट पर्सनल, सोशल एंड एथिकल डेवलपमेंट। सेकंड मैथमेटिक्स, जो कि स्पेशल नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडली फर्स्ट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड सेकंड कॉग्निशन एंड लर्निंग डोमेन्स के अंडर आते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी की जगह हम कंसर्न्स एंड चैलेंजेस पर फोकस करेंगे। सीसी के मेजर कंसर्न्स हैं। फर्स्ट, इनिशिएटिंग एंड एंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस, फ्रेंड्स बनाने में मुश्किल है। सेकंड, काउंटिंग नंबर्स अप टू 10 कंसिस्टेंटली, नंबर सेंस एंड सुबटाइजिंग में मुश्किल आ रही है। एसोसिएटेड कंडीशंस नहीं है। मदर टंग यानी वो लैंग्वेज जिसमें बच्चे सबसे पहले बोलना या बात करना सीखते हैं। अर्ली इयर्स और फाउंडेशन स्टेज में मदर टंग बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सीसी के लिए हम हिंदी मान लेते हैं। अदर लैंग्वेजेस जो कि बच्चा अच्छे से बोल, पढ़ या समझ पाता है, सीसी के लिए इंग्लिश मान लेते हैं। एनी अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जिसमें हम बच्चे, पेरेंट्स या क्लिनिकल और फंक्शनल असेसमेंट रिपोर्ट्स से मिले पॉइंट्स प्लस बच्चे की अचीवमेंट्स, इंटरेस्ट एरियाज प्लस एडेप्टेशंस और सपोर्ट रिक्वायर्ड एंड मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्विक रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज जिसमें हम आइडियली नंबर एंड टाइप ऑफ सेशंस नोट करते हैं इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी सेशंस। सीसी के लिए हम स्पेशल एड के अंडर 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट, इन क्लास सेशंस, रेगुलर क्लासरूम में सब्जेक्ट या क्लास टीचर के साथ। सेकंड, पुल आउट सेशंस, रिसोर्स रूम या ब्रेकआउट स्पेस में 1-on-1 सेशंस। नंबर ऑफ सेशंस टू बिगिन विथ 2 to 3 सेशंस पर वीक जिसमें हम 2 इन क्लास सेशंस एंड 1 पुल आउट सेशन लेंगे।
नेक्स्ट CBSE रिलैक्सेशंस CC के लिए अभी required नहीं है. With this, we land upon an integral and most sought after part of an IEP, that is the annual and short-term goals. We have decided to discuss two approaches based on the SMART, specific, measurable, achievable, relevant and time-bound framework for framing IEP goals. The first approach is technical, a little less subjective and more objective. The second approach is simple or comprehensive, a little less objective and more subjective. If you try to weigh them on a scale, one tilts towards or tries to be more quantitative and the other tilts towards or tries to be more qualitative, even though both are branches of the same framework, that is the SMART framework. We must consider both the options carefully and opt for an approach that matches the needs of our student and inclusion policy or framework of our educational setup or setting. For approach 1, in the light of AI revolution, we will try to show you how to use AI tools like ChatGPT and Google Gemini for framing individualized education plan goals. I will log in to my ChatGPT account. Please consider the following points while working or interacting with a chatbot or AI-powered engine. Try not to share your personal information or details or photos with it. Thoroughly read, analyze, review, and refine the output generated by the engine before using it. Go through the sources used by the engine, and remember, goals or plans or interventions developed by teachers who know or understand or have worked with the child are, were, and will always be more meaningful and rewarding on earth. In this segment, we will quickly discuss the responses generated by the AI tools, and we will try to discuss the responses in detail in the series AI Tools for Educators. Let us use formal style for writing the prompt. Let us enter the prompt for the first concern under personal, social and ethical development. Can you create an annual goal and corresponding short-term goals for the Individualized Education Plan or IEP of a student in reception foundation stage who is finding it difficult or struggling to or is not able to initiate and engage in conversations with her peers and teachers at school based on the SMART framework or principle used for framing or writing IEP goals. Let us read the responses generated by ChatGPT. Absolutely, here's an example for SMART: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound annual goal, and aligned short-term goals for a reception or foundation stage student who is finding it difficult to initiate and engage in conversations with peers and teachers. So it was able to identify the area of need as social communication or language and communication development. And for annual goal we have, by the end of the academic year, the student will independently initiate and engage in short conversations, 2 or 3 exchanges with peers or adults during structured and unstructured classroom activities in at least 4 out of 5 observed opportunities as measured by teacher observations and communication checklists. It explains how this goal is aligned to the SMART framework. Specific, focused on initiating and maintaining brief conversations; measurable, observable in 4 out of 5 opportunities; achievable, developmentally appropriate for reception; relevant, builds core communication and social interaction skills; time-bound, to be achieved by the end of the academic year. For short-term goals, we have short-term goal number 1 for term 1. Within 10 weeks, the student will respond verbally to a greeting or question from a familiar adult or peer in 3 out of 5 opportunities using words or short phrases as observed in daily routines and circle time. The focus is on building comfort and responsiveness in social exchanges. Short-term goal number 2 for term 2. Within 20 weeks, the student will initiate a simple interaction, example greeting, asking to join play, making a request with a familiar peer or adult in 3 out of 5 opportunities with minimum adult prompting as observed during play and small group activities. The focus is on encouraging initiation of communication. For short-term goal number 3, term 3, within 30 weeks, the student will maintain a simple conversation for 2 to 3 turns
with a peer or adult in 4 out of 5 opportunities with occasional adult support as observed during structured and unstructured activities. The focus is on extending and sustaining interactions. Let's quickly jump over to Google Gemini. I will log into my account. For the second major concern, let us use an informal or conversational style for writing the prompt. Please use the style if you can remember the fact that we are communicating with a chatbot and not a real person. Enter the prompt. I have a student in reception, foundation stage, who is finding it difficult to or struggling to or is not able to count numbers up to 10 accurately in a consistent manner. Can you help me frame an annual goal and aligned or corresponding short-term goals for the Individualized Education Plan or IEP of my student based on the SMART framework? Let us read the responses generated by Gemini. That's a common challenge in reception. We can certainly frame a SMART annual goal and corresponding short-term goals for your student's IEP. The goal will focus on improving counting accuracy and consistency up to 10. For annual IEP goal, under SMART component, specific and measurable, we have the goal statement when presented with 10 concrete objects, example counters, blocks, or a line of up to 10 drawn items. The student will accurately count them, demonstrating one-to-one correspondence and stating the correct final number. Under SMART component, achievable and relevant, we have the goal statement. This task is a foundational number skill for the foundation stage curriculum. Under SMART component time bound, we have the goal statement. This will be achieved by the end of the academic year. Example, June 2026. The annual goal would be, by the end of the academic year, when presented with a collection of up to 10 concrete or pictorial objects, the student will accurately count the items using one-to-one correspondence, that is touching or pointing to one object per number word, and correctly state the cardinality, that is the final number, on 4 out of 5 consecutive trials as measured by teacher observation and checklist data. For short-term IEP goals, it states these goals break down the annual objective into manageable steps, focusing on a progression of skills, that is also known as the learning trajectory, from a smaller range of numbers and structured areas to a larger range and less structured areas. They can be reviewed every 6 to 9 weeks. For short-term goal number 1, counting to 5 in a structured setting focuses on a smaller, manageable number range with aids to correspondence. Under SMART component, specific and measurable, we have the goal statement. The student will accurately count up to 5 concrete objects placed in a straight line, demonstrating one-to-one correspondence and correctly identifying the total number on 9 out of 10 opportunities across 3 separate data collections. Under achievable and relevant SMART component, we have establishes the core counting principles in a highly structured, low-demand context. Under time-bound SMART component, we have achieved within the first term, that is, by 9 weeks. For short-term goal number 2, counting to 7 in a semi-structured setting, the focus is on increasing the number range and introducing a slightly less structured arrangement. Under SMART component, specific and measurable, we have the goal statement. The student will accurately count a randomly arranged group of up to 7 concrete objects, consistently tracking and saying one number word per item, that is, with one-to-one correspondence, and stating the correct total number on 80% of opportunities across 2-week period. Under achievable and relevant SMART component, we have develops object tracking skills and extends the number sequence required. Under time-bound SMART component, we have this is to be achieved by the midpoint of the academic year, that is, by 18 weeks. For short-term goal number 3, counting to 10 in a pictorial or scattered setting, the focus is on achieving the final number range and moving from concrete objects to pictorial representations, mimicking the final annual goal. Under SMART component specific and measurable, we have the goal statement. When presented with a scattered group of up to 10 drawn items, example stickers, stamps, the student will accurately count all items and state the total number
that is with understanding of cardinality with no more than one self-correction in 7 out of 10 documented sessions. Under achievable and relevant, we have integrates all foundation skills, that is sequencing, one-to-one correspondence and cardinality up to 10 with a more challenging format, that is pictorial or scattered setting. Under time bound, we have this is to be achieved by the start of the final term, that is by the end of 27 weeks. For key interventions for the teacher, it states to support these goals, focus on explicit teaching of the 5 counting principles established by Gell-Mann and Gallister, which is a reference to the work of Professor Rochelle Gell-Mann and Randy Gallister, who put forth the 5 counting principles of the learning trajectory we must consider when it comes to building number sense among children. It begins with the first level, that is one-to-one correspondence, moving, touching or pointing to each object as a number word is said. We move on to the next level or we progress on to the next level. Second, that is stable order, saying the number words in the same correct order. 1, 2, 3 and so on. We progress on to the next level. Third, cardinality, that is understanding the last number counted represents the total number of items in the set. From there on, we move on to the next level. Fourth, abstraction, that is understanding that any set of items can be counted. Example, sounds, jumps, toys or drawings. From there on, we progress on to the next level. Fifth, order irrelevance, that is knowing that the order in which the items are counted does not change the total number of items. For approach 2, let us go back to our document CC's IEP and have a diligent look at the method recommended and used by my gurus in the field of special education, an approach wherein we use our ability to think, reflect upon our students' need, use our understanding of the kid to create the IEP, annual and short-term goals with respect to the curriculum or adapted curriculum, goals and learning objectives, a process where we consciously engage in the art of drafting an individualized learning experience for our student, thereby making us better and more effective special educators with each passing day of our lives. सीसी के लिए पर्सनल, सोशल एंड एथिकल डेवलपमेंट के अंडर एनुअल गोल यानी वो गोल जो हम चाहते हैं सीसी एकेडमिक ईयर के समाप्त या क्लोज होने तक अचीव कर पाए, CC will be able to interact and play comfortably with other children and adults. And इस annual goal के corresponding हमने 2 short term goals यानी वो objectives जो हम चाहते हैं CC 2 या 3 months के time span में achieve कर पाए set किए हैं. First, CC will be able to initiate, engage and sustain conversations with her peers and teachers, जिसको हम technically building relational capacity भी कहते हैं. Second, CC will be able to make friends and play with them. इन दोनों short term goal से हम CC के major challenges को address करने की कोशिश कर रहे हैं. CC के लिए मैथमेटिक्स, स्पेसिफिकली न्यूमेरेसी स्किल्स के अंडर एनुअल गोल सेट किया है. CC will be able to demonstrate a good understanding of numbers up to 10 or specifically demonstrate fluency in counting concrete, discrete and abstract objects up to 10. And इस एनुअल गोल के करस्पॉन्डिंग हमने 2 स्मॉलर मैनेजेबल शॉर्ट टर्म गोल सेट किए हैं. फर्स्ट, CC will be able to accurately count objects up to 10 or specifically accurately count objects with an understanding of cardinality up to 10. कार्डिनैलिटी का मतलब ये समझना होता है कि एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स को काउंट करके जो लास्ट नंबर हम कहते हैं वो नंबर उस सेट के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के इक्वल होता है. Second, CC will be able to recognize quantities up to 5 without counting, यानी बिना एक्चुअली काउंट किए एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ देखकर अनुमान लगाना या एस्टिमेट करना कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स है, जिसे हम या मैथमेटिकल टर्म्स में सुबेटाइजिंग भी कहते हैं. और अच्छे से समझने के लिए हमने आईपी गोल्स को आपके लिए टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है. हमने गोल्स फ्रेम करने के लिए क्या किया? सबसे पहले सीसी की मेजर कंसर्न्स या प्राइमरी कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए शॉर्ट टर्म गोल्स फ्रेम किए. सीसी को कन्वर्सेशन इनिशिएट करने और एंगेज करने में डिफिकल्टी को एड्रेस करने के लिए टारगेट या गोल रखा. सीसी विल बी एबल टू इनिशिएट,
engage and hold conversations with her peers and teachers by the end of the first term. प्लस सीसी को फ्रेंड्स बनाने में मुश्किल को एड्रेस करने के लिए हमने टारगेट या गोल रखा सीसी विल बी एबल टू मेक फ्रेंड्स एंड प्ले विद देम बाय द एंड ऑफ सेकेंड टर्म. These short-term goals, along with other short-term goals framed during the course of the academic session based on CC's response and feedback received from teachers and parents, will act as stepping stones for enabling CC to achieve or move towards her annual goal one step at a time. That is, CC will be able to interact and play comfortably with other children and adults by the end of the academic year. Similarly, CC को mathematics और specifically numeracy skills में आ रहे challenges को address करते हुए पहले हमने short term goals frame किए. First, consistency and accuracy in counting को address करने के लिए CC will be able to accurately count objects with understanding of cardinality up to 10 by the end of term 1, plus subitizing या estimation के concept को समझने के लिए CC will be able to recognize quantities up to 5 or estimate the number of items in a set without counting up to 5 by the end of second term. इन दोनों प्लस और शॉर्ट टर्म गोल्स के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? सीसी को अपने एनुअल या करिकुलम गोल अचीव करने के लिए कॉम्पिटेंट या सक्षम बनाना चाहते हैं. दैट इज, सीसी विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स अप टू 10. फर्स्ट कंसर्न के शॉर्ट टर्म गोल्स एंड करस्पॉन्डिंग एनुअल गोल को हमने लर्निंग ट्रैजेक्टरी और लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज 2022 के पर्सनल, सोशल एंड एथिकल डेवलपमेंट डोमेन को रेफर करके फ्रेम किए हैं. सिमिलरली हम यूके नेशनल करिकुलम के पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट डोमेन को रेफर करके भी फ्रेम कर सकते हैं. उसी तरह न्यूमेरेसी स्किल्स डेवलप करने के लिए हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज 2022 एंड यूके नेशनल करिकुलम के अंडर मैथमेटिक्स डोमेन में दिए गए लर्निंग ट्रैजेक्टरी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स एंड करिकुलम गोल्स को ध्यान में रखकर फ्रेम किए हैं. हमें अपने स्कूल में फॉलो किए जाने वाले करिकुलम के अकॉर्डिंग गोल्स को मैप करने की कोशिश भी करनी चाहिए. ऐसे गोल्स फ्रेम करने से हमारा इंटरवेंशन मोर मीनिंगफुल, रेलेवेंट और क्रेडिबल बनता है. जब हम ऐसे गोल सेट करते हैं और उन्हें करिकुलम के गोल से मैप करते हैं, इन्हें हम कंसर्न या चैलेंज बेस्ड टारगेट स्पेसिफिक गोल्स भी कहते हैं. With this, we close part A of CC's IEP and end this segment. We will try to cover part B and part C of CC's IEP in the next segment of the course IEP 101, How to Prepare an Individualized Education Plan for your student. Thank you for spreading the light by sharing our work with your friends, family and colleagues. May the force be with you.